Bismillahirrahmanirrahim. Beta ji, today we are going to do equations of motion. Acha, in equations of motion ka na, there is another name. They are also said to be the equation of uniform acceleration. They can be only applied when the acceleration is uniform. Can you remember? ये एग्जाम में आया हुआ this point, right? अच्छा जी, equations of motion they will be three, लेकिन sometime the teacher they interchange them or change the shape only, rearrange them to convert into more than three equations. But three equations of motion are basic one, right? Okay, and all three equations they are related to the one same situation. And what is that? Let's say there is an object which is moving towards any direction. Let's say it is towards right with some velocity u, and it is moving with a uniform acceleration. Acceleration means क्या होगा? Velocity will be changing. Let's see after time t, its velocity now has changed to a value v. V is the final velocity, u is the initial, and during that time it has covered some distance that is s. In fact, x is the displacement, right? Clear? So, जी सर. first equation of motion, if it is asked, what will be the uniform acceleration A of the object? So, what is the formula for uniform acceleration? It is V minus U over T. So, T dividing will multiply here. We get AT is equal to V minus U, which is being subtracted, will become positive on the other side, will be added with the AT. So we get the formula V is equal to U plus. Beta, this is the first equation of motion, right? Can you write the derivation? Beta, Yes sir. derivations are very important. और ये derivations को you see, learn और जुबानी by heart you have to learn them and write them. ये आपके concept के लिए बहुत important है. तो अभी तो derivations main आनी है. Main derivations are yet to come. It's just starting. So derivations को pay respect to the derivations, right? Clear first equation of motion? जी सर. और ये derivation आसान जुबानी आनी चाहिए. Now the second and the most important, बेटा जी distance over time gives you what? ये हमने start में discuss किया था. Average speed. Because when you have come like you have come to academy from the home, आपने distance cover किया. But during all the journey, your speed was constantly changing. When some value is changing, and you have to tell one value, what that would be? An average value. Average तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना हसन. Distance divided by time is average speed, and displacement divided by time will be average velocity. velocity. ये हमने सबसे स्टार्ट पे डिस्कस किया था. अच्छा, इसको जी. रीअरेंज करें. T divide will multiply with the average velocity to give you the displacement as. Displacement. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा? हाउ डू यू फाइंड द एवरेज? आप दोनों वैल्यूज हमारे पास तो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है. तो हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज? आप दोनों वैल्यूज ऐड करोगे Add करके divide by 2. तो फाइनल, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी फाइनल इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. क्लियर बेटा? So this is how we get the average velocity. Acha, now look, this step is going to be important. Abhi we have just derived that u plus at is equal to v. So we substitute v by its value u plus, right? Hasan? जी क्या सर. अभी हमने प्रूव किया है
u plus at is equal to the V velocity, v final की जगह velocity. u plus at सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट? G. अच्छा, अब नाउ u plus u will make 2U. plus at over 2, कुछ और कोई चेंज नहीं किया, देयर इज नो अदर चेंज टू t, राइट? G. अच्छा, अब जो ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, और किससे होगा? विल बी मल्टीप्लाइड विद 2U and 80. तो t विद बोथ ऑफ देम, t u 2u से भी मल्टीप्लाई होगा, इट विल चेंज इनटू, और t 80 2UT. मल्टीप्लाई होगा, विल चेंज इनटू 80। 80 square. अच्छा, अब जैसे लाइक व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइंग विद will be multiplied with both of them, na? Similarly, 2 dividing will be divided by both of them, right? 2 will be dividing both, यानी t को दोनों के नीचे लिख दिया। क्लियर बेटा जी? जी G, हाँ, sir. do you understand? This 2 cancel by this 2, we get ut। अच्छा, ये अब कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो डिवाइडिंग 2 कैन वी राइट इट लाइक दैट, 1 over 2। So how now this formula is derived to ut plus half at square, राइट हसान? Yes, हसान, sir. इस चैप्टर का, बल्कि फिजिक्स के बहुत बड़े पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? राइट? Yes, sir. हसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैंने 6 क्वेश्चंस करवाने हैं, अगर नहीं करवाऊंगा ना मैं, आई विल गिव यू 6 क्वेश्चन, challenging question. They last 3 questions will be very difficult for you to do, right? लेकिन वो आपके G, sir. पास पेपर्स के समझे 30 to 40% of this chapter will be done by that, these equation or those questions. Okay. अच्छा बेटा, यहाँ ना एक छोटा सा चेंज है, वो ये है कि here ना we substituted the value of v from this, but there could be another possibility that rather than substituting v, we have written this as it is. So now here we can also make u as a subject from this like this. How? ये जो 80 add हो रहा है, plus हो रहा है, it will be subtracting on the other Subtracted. side. So u की जगह हम क्या substitute कर सकते हैं? So V here minus 8. u की जगह substitute कर दिया v minus 80। तो अब आप थोड़ा सा इसे रीअरेंज करो ना जरा, ये v and v will give you 2v। तो अब बाकी डेरिवेशन वही स्टेप्स हैं, बट द फाइनल रिजल्ट विल बी दिस, एंड हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर इट? कैसे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हैज 2 फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ये 2 फॉर्म्स हैं, याद कैसे करना है? इफ देर इज ut इट विल बी प्लस हाफ एट स्क्वायर, और vt होगा, इट विल बी माइनस हाफ एट स्क्वायर, राइट हसान? G, sir. बेटा कैसे याद रखना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा, मैंने इसको VT सोल्व, होगा तो माइनस. ये जो है डेरिवेशन को मैंने सोल्व नहीं किया, लेकिन बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, राइट बेटा जी? तो जी बस सर. वहां ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो vt में क्या आ जाएगा? माइनस हाफ एट स्क्वायर। कैन यू रिमेम्बर? याद जी रहेगा? सर. और इट मैटर्स, इन सम सिचुएशन वी कैन ओनली यूज दिस, नोट दिस, एंड वाइस वर्सा। क्लियर बेटा जी? तो जी इसलिए सर. अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रीअरेंज इन 2 ways, राइट? ओके। नाउ हसान, आपने नोट कर लिया बेटा? जी हसान, नोट कर लिया आप बेटा? जी सर, कर लिया. ओके। नाउ कंसीडर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा जी, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड फ्रॉम हियर s is equal to average velocity times the time,
तो हम ये स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं, ठीक है बेटा, क्लियर? जी ओके, नाउ हाउ डू वी सब्स्टिट्यूट द एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वी विल ऐड बोथ द वेलोसिटीज एंड डिवाइड बाय 2, क्लियर? अच्छा, जी वी हैव ऑलरेडी डन, लेकिन हमने इस इक्वेशन मोशन में टी को वी केप्ट टी एज इट इज, है ना? सो हियर जी व्हाट सर वी आर गोइंग टू डू कि हम ना यहां टी को सब्स्टिट्यूट करने लगे। हम टी को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा? लुक, हमारे पास फॉर्मूला ना, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू ओवर, तो टी विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज, मेक टी एज अ सब्जेक्ट, तो इट विल बी v माइनस यू ओवर, तो बेटा ए दिस वैल्यू ना टी की, हम इस टी की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, राइट? जी ओके, डेरिवेशंस। ओके बेटा जी, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, ये दो फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइंग, so when we multiply two fractions, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर, तो t डिनोमिनेटर से टाइम्स a will make 2a, क्लियर बेटा जी? ओके, अच्छा u प्लस v और v माइनस u का रिजल्ट क्या होगा? मैथ्स में वी डू ना a प्लस b माइनस मल्टीप्लाई बाय a माइनस b गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली देखो, ये टू एंड यू एंड वी आर एडिंग, and we you and we are subtracting, so multiplying them will give you v square minus यू u। स्क्वायर अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, why not u square minus v square? क्योंकि यू के साथ माइनस है अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर है, पता है कैसे? u plus b in addition we can change the order, it will not make difference, you write u plus v or v plus u, it remains the सेम same, but in minus we, when we change the order the value will be, it is not same, so it means in minus we cannot change the order, otherwise the पोजीशन values or the equation will be changed. So we have to give respect to the order in negative, minus. So in minus v comes before then u, so v square will be coming before. And also if you know how to multiply in algebra, the answer will be as it is, v square minus u square, right? Clear? Acha, जी now सर v square minus u square, 2a dividing will multiply here, so the equation turns into 2as is equal to v square minus u square. Beta, it is the formula, only formula, there is no time, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, note it down. Whenever we have to use equation of motion and we are not given any time, this is the best formula to use there, right? So beta जी Hassan, we have got three equation of motion, और वो क्या है? एक equation of motion, first one is v v is इज equal इक्वल टू यू to, प्लस 80 और सेकेंड इक्वेशन मोशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं, वो क्या है? एस इज इक्वल टू यू यू टी टी प्लस प्लस हाफ हाफ एटी ए टी स्क्वायर स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू वी बी टी माइनस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बस व्हेन इट कम्स बी टी तो आपने माइनस लगा देना प्लस की जगह, राइट? और जी द सर नेक्स्ट वन इज 2as इज इक्वल टू टू वी एस इज स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी यू स्क्वायर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, देयर इज अनदर फॉर्म, ये कोई जरूरत नहीं थी, we know average speed is distance over time, so average speed is also u plus v over 2. So this could be another form, another equation of motion, but it is just rearranged. You don't need to be impressed, right? आप जी इसको यूज किए बगैर बाकी तीन से भी वही रिजल्ट कर सकते हो,
तो जस्ट ना इट्स अनदर शेप, अगर आप याद कर लोगे इट विल बी अ प्लस पॉइंट, नो डिसएडवांटेज। व्हाट डू यू थिंक? तो बेटा ये जी सर। इक्वेशन मोशन है हसान, दीज आर सो इम्पोर्टेंट कि आप स्लीपी हो, थोड़े सोए हुए हो, तो कोई बोले ना एस इज इक्वल टू, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपके मुंह से खुद ही निकल है, राइट? इट्स सो इम्पोर्टेंट, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर। क्लियर? जी सर। ओके, आर यू जी रेडी सर। नाउ फॉर द चैलेंज? जी। अब कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो चाहूंगा पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो क्वेश्चन आप यहां नहीं कर पाएंगे क्लास में, so you can try those at home. The question number 5, whoever does question number 5 will be a genius student. A challenging question. Can you try? Can you take a जी सर। screenshot of these questions? जी सर डन। Done? Okay, I'm waiting for the other student, Hassan, जो इधर बैठे हुए हैं। ठीक है? ये 6 questions में से majority नहीं होंगे वैसे आपसे। Now you are ready? जी So सर। let's have a look at the question number 1. Now you can see in the screen. You have taken the screenshot, saved it. Okay, now question number 1 देखेंगे. A jet plane takes off when reaches 50 kilometer per hour. You see a plane when it starts to speed up, accelerate, and at a certain speed, when it reaches a certain speed, he automatically starts to lift, right? So it takes off, that is taking off speed, that is 50 kilometer per hour. If its maximum acceleration is 4 meter per second square, find the minimum length of the runway required. Hassan, formulas are given with you, beta. You can suggest जी me the सर। formula. Very right. Right. So, Hassan here, the student is saying, minimum length is the distance now, जी। and we are not having any hint of time. So we will जी सर। use third equation of motion. He is right. ओके, नाउ आप मुझे अपने साथ साथ ना वैल्यूज बताएंगे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर, क्या फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? आसान, ये याद होना चाहिए बेटा नेक्स्ट टाइम। जी सर। 2as is equal to v square minus, यू अच्छा, स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? 4 मीटर पर सेकेंड। वेरी राइट। s, तो फाइंड करना है, कीप एज इट इज। s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए यूज होता है, s इज डिस्प्लेसमेंट, तो s तो हमने फाइंड करना है। अच्छा, फाइनल जी। स्पीड क्या होगी? 50। आसान, यहाँ गलती हो रही है। The acceleration is in meters per second square, but the final speed is kilometer per. किलोमीटर हसान, हमने आवर्स। तो प्रैक्टिस की हुई। How you convert kilometer per hour into meter per second? डिवाइड बाय 3.6। Very well answered. Divided it by 3.6. Surosh, please have a look at it. Beta, when the speed is given in kilometers per hour, you divided it by 3.6 to convert it into meters per second. Now you can solve the rest by yourself. ठीक है बेटा? जी सर। Okay. So I want to remove. And Surosh, why 3.6? Actually, you joined us a bit late. When we started this kinematics now, we have discussed it. Okay, that's good. So now, if you, we have a recording lesson for that one. If you sometime wish how we did that, you're right now.
You're repeating the AS level. Okay, yeah, you are mashallah doing good. With respect to Hassan, हो जाएगा बेटा? Should we move to the next जी question? सर जी सर Let's. The easiest question of this all is two. A brick is dropped from 80-meter height from rest. At what speed and time does it reach the ground? थर्ड वन यूज करेंगे सर थर्ड वन यूज कर लो, बिल्कुल करो. अच्छा, द इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, वेन एवर समथिंग इज फॉलिंग और राइजिंग अंडर ग्रेविटी, देन द 9.8 एक्सीलरेशन 9.81 लेना. 9.81. ओके सर आप क्या लेंगे? 9.81, 81 and that acceleration will be small g. तो कोई चीज भी फ्रीली फॉल कर रही है, एक्सेलेरेशन इज g, एंड दैट विल बी टेकन टू बी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हसान, जी आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आप v फाइंड करेंगे, तो आप सजेस्ट कर रहे हो हम क्या लगाएंगे? थर्ड थर्ड इक्वेशन. इक्वेशन यू कैन डू इट सेकंड से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वहां से आपको टाइम पता चलेगा. तो बेटा, यू कैन डू इट मैनी अवेज. ये एक ही क्वेश्चन, देखो जब हमने डिराइव किया था तो बेसिक्स वही है सबकी, है ना? जी सर लाइक ये देखो कि एस, ये एवरेज स्पीड से जो स्टार्ट हुआ डेरिवेशन में, ये देखें यहाँ ये डेरिवेशन है, एस इज इक्वल टू ये एवरेज इनटू टाइम. तो सेकंड की भी डेरिवेशन वहीं से थी, बी एवरेज इनटू टाइम एस. तो बेटा, इसलिए ना आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हो. सो एक मेथड है, वी यूज दिस वन, फाइनल स्पीड माइनस, और इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ना, तो इनिशियल स्पीड विल बी zero. Or 0 final speed we have to find, and acceleration is 9.81 and displacement is 80. You find v will be very very close to 40 meters per second, maybe 39 point. Okay, so almost 40 if we round off. So now we got v. How would you find the time? You can use the first equation of motion, which is actually a rearranged shape of acceleration formula, right? So final velocity is 40, initial is 0, acceleration is 9.81, and the time will be almost equals to 4 seconds. 4 point something, right? Clear? जी Ji सर Hassan, done? Okay. जी सर Up now, the challenging questions are coming. Are you ready? जी सर Okay. So the last question for today. In fact, the next question we will be we'll discuss in the next class. Okay, beta ji. Question number 3. A stone is dropped from a very high cliff from rest at time 0. So it will keep falling down. Calculate the distance covered from the time is equal to 3 seconds to 4 seconds. Hassan. जी बेटा. जी. सर इसमें सेकंड भी कर सकते हैं थर्ड भी कर सकते करो. I want the answer, बेटा. हैं जी सर मैं करता हूँ Hassan, I will be happier if you do this question. Acceleration is 9.81. Let me tell you again. Right? जी सर
I said good questions are coming now. G. Now, and let me share. How would you do, Hassan? Any idea? Beta G, सर नहीं समझ में as it will be falling down, its speed will be increasing. increasing You only know that के starting speed zero है बस. जी And you will use that information. So, an acceleration, you know 9.81. So, what will you do? You will use this formula twice. Yes. Once now, you will use the initial speed is zero to find the distance covered in first second 3 to 4 3 seconds. ठीक है Hassan? You call that distance to be S1. Then you use the same formula to find the total distance covered in 4 seconds more than one type of these questions have come in the past paper. Hassan, keep it in mind. So this is the total distance. Can you solve it now? This will be the total distance covered in 4 seconds S2. S1 is the total distance covered in 3 seconds. And you have to calculate the distance between 3 and 4 seconds. क्या करेंगे हसन? minus वेरी राइट, शाबाश हसन. अगले 3 क्वेश्चन बेटा आपने ट्राई करने. जी क्लियर? सर तो जी इंशाल्लाह. अच्छा, कल क्लास में दे विल बी अ स्लाइड चेंज. आप घर से ही क्लास लोगे बेटा?